Good morning, students. Myself, Major Komal Gatyal, Department of Zoology, GK Govani, Government College, Bhinmar. Today, we will discuss about Urea Ornithine Cycle. आज हम बात करेंगे यूरिया चक्र के बारे में. The urea is the main or chief excretory product of ureotelic animal. As you know, we have classified the animal kingdom into three categories on the basis of type of main excretory product. In the case of ureotelic animal, including the human being, the chief excretory product is urea. Basically, we classify them into three: the ammonotelic, ureotelic, and uricotelic. As urea is less toxic than ammonia and it requires moderate amount of water, it is suitable for terrestrial or semi-terrestrial mode of life. This urea is produced in the animal by a cyclic process known as the urea cycle or the ornithine cycle. The urea ornithine cycle basically takes place inside the liver. This mechanism was proposed by Hans Krebs and Hansleit in 1932, and it was the first cyclic metabolic pathway to be discovered. Nearly 5 years before the Krebs cycle was discovered or described by the Krebs, the overall process required 3 moles of adenosine triphosphate, the ATP, and successive participation of 5 enzymes. The ornithine which is used in reactions 2 is regenerated in reaction 5. So there is no net gain or loss of ornithine, and hence it is known as the ornithine cycle or Krebs Hansleit cycle. So the 5 reaction includes the synthesis of carbamoyl phosphate, or we can say the ammonia enters in the urea ornithine cycle in the form of carbamoyl phosphate. In the second stage, there is synthesis of citrulline. Then there is synthesis of arginosuccinic acid. So carbamoyl phosphate, then citrulline and arginosuccinic acid. Then the cleavage of this arginosuccinate or succinic acid into arginine and fumaric acid. Arginosuccinic acid and arginine both are 4N compound. It means they have 4 nitrogen atoms, while citrulline has 2. Then cleavage of this arginine into ornithine and urea. So ornithine has 2 nitrogen atoms, while urea has also 2. Citrulline has 3. So if we look at all these steps, पहले चरण के अंदर कार्बामिल फॉस्फेट का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, जो 1N कंपाउंड है. ये 1N कंपाउंड 2N कंपाउंड ऑर्निथिन से मिलकर सिट्रुलिन का संश्लेषण करता है, जो 3N कंपाउंड है. सिट्रुलिन फिर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है, जो 4N कंपाउंड है, और ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड फिर विभाजित होकर आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है, और फिर आर्जिनिन जो 4N कंपाउंड है वो ऑर्निथिन और यूरिया दोनों 2N कंपाउंड है उनमें विभाजित होता है. ये ऑर्निथिन फिर वापस कार्बामिल फॉस्फेट से यूनाइट होके सिट्रुलिन का निर्माण करता है, और इस तरह से ये प्रक्रिया जारी रहती है.
This is the complete urea ornithine cycle. You can see on one side the mitochondrial matrix where the N-acetyl glutamate in presence reacting with ammonium bicarbonate and two ATP molecules, and in presence of carbamoyl phosphate synthetase enzyme there is formation of carbamoyl phosphate, which is one nitrogen atom containing compound, and this one nitrogen atom containing compound combined with ornithine, which is a 2N compound, and there is formation of citrulline, which is the second reaction in this case. The citrulline then comes out from the mitochondrial matrix into the cytosol, that is into the cytoplasm, and in the cytoplasm there is addition of aspartic acid. So 3N comes from citrulline and 1N comes from aspartic acid in the form of aspartate. There is utilization of one molecule of ATP here and formation of arginosuccinate or arginosuccinic acid, which is 4N compound, and this in presence of arginosuccinase cleavage into arginine and fumaric acid, and then arginine cleaves to form the urea and ornithine. This ornithine again combines with carbamoyl phosphate and the reaction goes on in the cyclic manner, while the urea goes to the blood from liver, and from blood it goes to the kidney where filtration of urea takes place, and ultimately the urea is removed from the body along with the other compounds in urine. So reaction 1 is the formation of carbamoyl phosphate, which is catalyzed by carbamoyl phosphate synthetase. The second is ornithine carbamoyl transferase, that is the formation of citrulline. Third is the formation of arginosuccinate in presence of arginosuccinate synthetase. Reaction 4 is arginosuccinase, responsible for cleavage of arginosuccinic acid into arginine and fumaric acid, and then arginase for the cleavage of arginine into urea and ornithine. So carbamoyl phosphate synthetase and ornithine carbamoyl transferase, these are the two enzymes of the first two stage are present in the mitochondria, as I have told you earlier in the slide that these two reaction actually takes place in the mitochondrial matrix, while the remaining enzymes are present in the cytosol, that is arginosuccinate synthetase, arginosuccinase and arginase. तो जो यूरिया चक्र के दो चरण हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पूरे होते हैं और बचे हुए 3 चरण कोशिका द्रव्य के अंदर पूर्ण होते हैं। तो 2 एंजाइम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और बचे हुए 3 एंजाइम जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म से जो अंतिम चरण में जो ऑर्निथिन का निर्माण होता है, ये ऑर्निथिन फिर क्या होता है, वापस प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और कार्बामिल फॉस्फेट से जुड़कर वापस सिट्रुलिन का निर्माण करता है। So this is regarding the first step where there is synthesis of carbamyl phosphate. You can see it is a 1N compound and there is release of 2 ADP and 1 inorganic phosphate, that is 2 inorganic phosphate in fact. So there is utilization of 2 ATP molecules here. The ammonia is the other compound giving nitrogen. So one nitrogen atom is coming from ammonia in the form of ammonium and 2
coming from ornithine. The reaction also requires the magnesium ion as well as N-acetyl glutamic acid as an allosteric factor. This is regarding the second reaction in which carbamoyl phosphate reacts with ornithine to form the citrulline. This is the third reaction where citrulline is combining with aspartic acid and there is formation of arginosuccinic acid. So you can see there are two carboxylic group present in the aspartic acid, and these two carboxylic groups are then removed when arginosuccinic acid is cleaved into arginine and fumaric acid. You can see two carboxylic group are present in the fumaric acid and the remaining one in the arginine. After the cleavage of this arginine, into ornithine and urea, which is the last step taking place, you can see that one CO is present in the urea, which has two amine group, while ornithine has the remaining two amine groups. So the four amine groups which were present in the arginine 2 goes to the urea and the remaining 2 to the ornithine. And this ornithine then again enters the urea or Krebs Hansleit cycle along with the carbamoyl phosphate, and there is formation of citrulline and the cyclic process goes on. तो हम बात कर रहे थे यूरिया चक्र के बारे में कि यूरिया चक्र के अंदर जो 5 अलग अलग पद हैं, पहले पद के अंदर जो कार्बामिल फॉस्फेट है उसका संश्लेषण होता है। कार्बामिल फॉस्फेट के संश्लेषण के लिए कार्बोनियम बाइकार्बोनेट आयन मतलब, या हम कह सकते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 2 एटीपी अणुओं की उपस्थिति में कार्बामिल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अमोनिया अमोनियम आयन के रूप में प्रवेश करती है। तो एक जो अमोनियम आयन है, जो अमाइन ग्रुप है, वो अमोनिया से आता है कार्बामिल फॉस्फेट में। दूसरे चरण के अंदर जो ऑर्निथीन, जिसमें 2 अमाइन ग्रुप होते हैं, इस कार्बामिल फॉस्फेट से जुड़कर 3 अमाइन ग्रुप वाले सिट्रुलिन का निर्माण करता है। ये सिट्रुलिन फिर एस्पार्टिक एसिड, जिसमें 1 अमाइन ग्रुप होता है, सिट्रुलिन में 2 अमाइन ग्रुप होते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, उससे ये जुड़कर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है और इसके लिए वापस एक अणु एटीपी की आवश्यकता होती है, जिससे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट बनता है। तो जो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 4 अमाइन ग्रुप होते हैं। फिर इस आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में विभाजित हो जाता है। फ्यूमेरिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और आर्जिनिन के अंदर 1। आर्जिनिन के अंदर 4 अमाइन ग्रुप होते हैं। अगले चरण में ये आर्जिनिन फिर डिवाइड होकर एक यूरिया और एक ऑर्निथीन के अणु का निर्माण करता है। दोनों के अंदर 2-2 अमाइन ग्रुप पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो यूरिया ऑर्निथीन चक्र है, इस पर व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। With this, I finishes my lecture on urea ornithine cycle.